ఈ వయసులో కూడా నా కాళ్ళ మీద నిలబడుతున్నానంటే దానికి కారణం ఎవిస్ హాస్పిటల్. మన కాళ్ళల్లో వచ్చే సిరల వాపులకి కుట్లు, కోతలు, రక్తస్రావం లేకుండా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. అద్భుతం కదా. లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై చర్చ వాడివేడిగా జరిగింది. మహిళా బిల్లును కాంగ్రెస్ హయాంలోనే రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టామని సోనియా గాంధీ అన్నారు. ఆలస్యం చేయకుండా బిల్లును వెంటనే అమల్లోకి తేవాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. బిల్లును త్వరలోనే అమలు చేస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। This bill was brought shrouded in secrecy. We did not know why this session was called for. In the all-party leaders meeting, there was no mention of this bill. I don't know if any of the political party leaders were called for discussions and deliberations about bringing the bill. And suddenly, the bill popped up from our computer screens like Jack in the Box. I stand on behalf of the Nationalist Congress Party in full support of this bill. Up ST, SC, OBC, let's make a constitutional amendment. It's a special session. Let's send a message to this nation that we are committed to ST, SC and OBC. What is wrong with that? And if they have a different view, BJP must clarify that stand. So if they want to be the change, what they say, so they should apply it in Rajya Sabha. We will support it. I'm sure the entire India, we will support it. This Modi government wants increased representation for Savarna women. They don't want representation for OBC women and for Muslim women, sir. 690 women MPs have been elected till the 17th Lok Sabha, and out of this 690, only 25 have come from the Muslim community. In 57, 62, 91, 99, there has been no Muslim woman got elected. This government does not want to live in a world where marginalized people get substantial representation. You want a parliament which consists of only bade log. You don't want people from Chote Log to enter in this August House, sir. This bill will deny fair share to OBCs. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament and in the assembly, sir. And this bill is what? This is a woman deception bill. This is a check bounce bill. This is an anti-OBC and Muslim women bill. This is a distraction bill. This is not an inclusive bill. This is an exclusive bill. और अभी 2014 में हम लोग का इलेक्शन आ रहा है। हम लोग का डिमांड ये है, इमीडिएटली ये बिल जो है ना रिजर्वेशन 33% का जो रिजर्वेशन इमीडिएटली इंप्लीमेंट करे, इमीडिएटली जो है ना अभी इलेक्शंस में ये करे। अदरवाइज इसको जो है ना ये कम से कम ये बता दे कब तक जो है ना ये डिलिमिटेशन होगा, कब तक जो है ना ये सेंसस जो है ना कंप्लीट करेगा, उसका टाइम बाउंड भी थोड़ा बता दे। उसी के साथ जो है ना ये बिल को पूरा हम लोग मदद कर रहे हैं। इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए मान्यवर। इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे
और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। मान्यवर